हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात किया था रिजल्टेंट वेक्टर के डेरिवेशन पर और यूनिट वेक्टर्स डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन डिस्कस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स से वी हैव दिस इंक्लाइन प्लेन एंड हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है विच इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन. This is theta, the angle of inclination. So now, ये जो हमारा मास है, ये जो बॉडी है m मास का, it will exert a force downwards which is mg, mass into gravity, acceleration due to gravity. and ये जो हमारे mg है, हमें इसे दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है इन द केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन. सो जब भी हमारे पास इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस आएंगे, हमें इस mg को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है. दैट इज ना दो कंपोनेंट्स. जो हमारा पहला कंपोनेंट होगा दैट इज along the inclined plane and the other component that is perpendicular to the plane. So ये हमारा थीटा है and this is making 90 degrees with the ground. ये थीटा, ये 90 डिग्री, so obviously ये वाला एंगल हमारा 90 minus थीटा होगा. Let's write 90 minus theta, and if this angle is 90 minus theta, then definitely this angle will be theta. अब हम सबको पता है जिस तरफ थीटा का कंपोनेंट होता है उस तरफ हम cos यूज करते हैं. So one is along the plane, that means in this direction, and the other one is perpendicular to the plane, that means in this direction. अब इधर हमारे पास थीटा है, so definitely cos का component that is mg cos theta, and here we are left with mg sin theta. So I hope that's clear. जब भी हमारे पास इंक्लाइन प्लेन आएगा, the first thing we have to do is to break this mg into two parts. One will be along the plane, that means in this direction, and the other one will be perpendicular to the plane. And the perpendicular part will always be mg cos theta, and the along the plane part will always be mg sin theta. So now let's take one basic question. So let's say we have a plane. We have the x-axis and the y-axis. Now let's take three vectors. Let's name them A vector, B vector, and C vector. Let's say A is of 5 meters, B 3, and C 2 meters. The angle of inclination is 37 degrees, and we are asked to find the resultant of these three vectors. Now we can see जो हमारा B vector है that is only along the x-axis, एक ही डायरेक्शन में. वो जो हमारा C vector है that is only along the y-axis, but जो हमारा A vector है that is at an angle. वो x-axis पे भी है और वो y-axis पे भी है. So that means इस A vector का हमें component करना पड़ेगा. All of us know one will be mg sin theta. All of us know one will be sin theta and the other one will be cos theta. So let's write 5 cos 37 and 5 sin 37. This cos will be in the I cap direction, that is in the x direction, and this sin 37 will be along the j cap direction, that is along the
y direction. So 5 cos 37 is 4i cap plus 5 sin 37 is 3j cap. We are left with 4i cap and 3j cap. And for B हमारा सिर्फ x डायरेक्शन में है, that means 3i cap. This was for A. B is equal to 3i cap. And C is only in the y direction, that is 2j cap. So we are asked to find the resultant of these three vectors. That means A vector plus B vector plus C vector. That is, let's first add all the I caps. 4 and 7. 7i cap plus 3 and 2. 5j cap. Now let's find out the magnitude of this resultant. This is the resultant vector 7i plus 5j. Now let's find the magnitude and direction as well. Resultant vector ka magnitude. So this was our x-axis and this was our y-axis. Our answer was 7i plus 4j. I'm sorry, 7i plus 5j cap. So I cap, that means x-axis, and j cap, that means y-axis. So this is 5 and this is our 7, and this will be our resultant vector. हमें इस r vector का magnitude निकालना है. This will obviously be 90 degrees. So we know the formula, r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. R is equal to under root of a square, that is, let's take 7 square plus b square, that is 5 square, and 2ab cos theta. This angle between the x-axis and y-axis is 90 degrees. So cos theta, that is cos 90, that is equal to 0. So this entire term will be equal to 0. We are not required to write that. So we are left with under root 49 plus 25. So that is under root of 74. ये था हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अब हम चाहें तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं. पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन निकालने के लिए हम हमेशा tan का कंपोनेंट यूज करेंगे. हमने वो शो भी किया था कि क्यों हम tan यूज करेंगे. सो tan थीटा, and tan theta is perpendicular upon base. अब हमारा perpendicular क्या है? That is 5 and the base 7. So tan theta is equal to 5 by 7, and the mathematical way of representing theta is tan is equal to theta is equal to tan inverse 5 upon 7. So this is our direction. Hope that's clear. Now, a very important topic under vectors, that is multiplication of vectors. Multiplication of vectors.
सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. One is dot multiplication and the other one is cross multiplication. Now, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, a वेक्टर एंड b वेक्टर, अगर हम इन दोनों को डॉट मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, so the product will be a scalar product. और अगर हम किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, so the product will be a vector product. This is very important. अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, so the product will be a scalar quantity. और अगर हम किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, the product will be a vector quantity. Now, डॉट, ये जो हमारा डॉट मल्टीप्लिकेशन है, दिस डॉट इज रिप्लेस्ड बाय cos थीटा. ये डॉट को हम जब भी रिप्लेस करेंगे cos के कंपोनेंट से, दैट इज cos थीटा, एंड ये जो हमारा क्रॉस है, दैट इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय sin थीटा. सो ये हमारा था a वेक्टर डॉट b वेक्टर. सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा. इधर हमने डॉट को cos थीटा से रिप्लेस किया, एंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ab sin थीटा. So this is a very important introduction to the multiplication of vectors. So now let's proceed. So now let's discuss few points. Before proceeding further, let's discuss some points. First, if theta is less than 90 degrees, a vector dot b vector is positive. That means a vector cross b vector के बीच जो angle होगा, that will be acute. Second, if theta is greater than 90 degree, then a vector dot b vector will be negative. That means the angle formed will be obtuse in nature. अभी हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में. Now, third, if a vector dot b vector is equal to ab, that means जो हमारा थीटा है, this dot का रिप्लेसमेंट ab cos थीटा, that is 0. Cos theta, not cos, let's only write theta. Theta is equal to 0. Fourth, if a vector dot b vector is equal to negative ab, अगर इस डॉट को हम फिर से cos थीटा से रिप्लेस करें और जो हमारा प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, that obviously means theta 180 degree है हमारा. Now let's take some questions.
क्वेश्चंस के पहले एक बात और हम बताना चाहेंगे. We have studied unit vectors in the last previous video. All of us know अगर हम I cap, J cap, K cap का मैग्नीट्यूड कंपेयर करें तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है बिकॉज यूनिट वेक्टर्स आर स्पेशल वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड 1. सो अगर तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है सो कैन वी राइट I cap इज इक्वल टू J cap इज इक्वल टू K cap. एंड हम मॉड का साइन दे भी सकते हैं मैग्नीट्यूड सिग्निफाई करने के लिए और नहीं भी दे सकते हैं बिकॉज यूनिट वेक्टर्स ओनली सिग्निफाई डायरेक्शन. न्यूमेरिकल्स में जाने के पहले एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा. हम सबको पता है I cap, J cap, K cap इन सारे यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है बट यूनिट वेक्टर्स ओनली सिग्निफाई डायरेक्शन. सो हमें ये मॉड्यूलस का साइन यूज करना पड़ेगा सो दैट हम मैग्नीट्यूड शो कर सके यूनिट वेक्टर्स का. सो I vector is equal to J vector is equal to K vector and all of them are equal to 1. This is the symbol for magnitude. Now A vector dot B vector is equal to AB cos theta. अब हम A और B ले या फिर I J that depends on the question. So तीनों का मैग्नीट्यूड 1 ही है. सो कैन वी राइट A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 1 1 cos थीटा. ये A और B हमेशा हमारा 1 रहेगा whether it be I J K ये हमेशा हमारा 1 रहेगा. द मैटर इज थीटा. हमारा आंसर डिपेंड करेगा इस थीटा पे. कैसे? if theta is an angle between two same unit vectors. If theta is an angle between two same, the product is 1. अब इसका क्या मतलब है? If theta is an angle between two same unit vectors, the product is 1. Let me explain. अगर ये हमारे पास एक plane है, let's say we have the x-axis, y-axis, and the z-axis, and unit vector x-axis के along I cap, y-axis के along j cap, और z-axis के along k cap. So, अगर हमारा जो A और B है, if theta is an angle between two same unit vectors, अगर I वेक्टर और दूसरा भी I वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, that means the product is 1. ये प्रोडक्ट 1 कैसे आएगा? Using this formula. Because A और B कुछ भी रहे, be it I or IJ or JJ anything, it will be 1.1. So 1.1 cos theta. और हमारा जो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं वी आर एज्यूमिंग कि वो सेम डायरेक्शन में है. सो लेट्स से cos 0 is 1, so 1 into 1 that is 1. So this is how the product is 1. But let's now change it. If theta is an angle between two different, let's make it different. If theta is an angle between two different unit vectors, then the product is 0. 0 कैसे? Let's see. As I said, ये 1.1 is common. ये same रहेगा. The thing which matters is this theta. अब two different unit vectors. Let's say हमारा एक वेक्टर x है. I'm sorry. Let's say हमारा एक x axis है और एक y axis है, and one is I cap and the other one is j cap unit vectors.
सो एक हमारा इस डायरेक्शन में है, एक हमारा दिस डायरेक्शन में है. दैट मीन्स द एंगल इज 90 डिग्री. सो दैट मीन्स 1 cos 90 एंड ऑल ऑफ अस नो cos 90 is 0. सो ये जो हमारा पूरा टर्म है दैट विल बी इक्वल टू 0. This is how if theta is an angle between two different unit vectors, the product is, the dot product to be precise, the dot product is 0. हम एक क्वेश्चन लेते हैं so that it becomes more clear. Let's say A vector and B vector, 5i cap and 6j cap. और जो हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया, if theta is an angle between two different unit vectors, so we can also write two perpendicular vectors, because vectors different तभी होंगे जब वो perpendicular होंगे. वो कैसे? Let's again draw the plane, x axis, y axis, z axis. ये x axis इस डायरेक्शन में है, y axis इस डायरेक्शन में है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. और ये जो z axis है उसे हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज 3D वे में हम इसे प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. बट इन रियलिटी ये जो z axis है वो इस डायरेक्शन में है. सो इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ x axis एज वेल एज द y axis. So, अगर हमारा डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है, लेट्स मार्क इट i j k, अगर हमारे टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है, दैट मींस i and j और i और k और एनीथिंग, सो दैट मींस इट हैज टू बी परपेंडिकुलर. अगर डिफरेंट है दैट मींस इट इज परपेंडिकुलर. सो वी कैन आल्सो से इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन द प्रोडक्ट इज 0, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स विल आल्सो डू. Now let's get back to the question. A vector is 5i cap and B vector is 6j cap. We are asked to find A vector dot B vector. So ये सारे numbers को हम एक तरफ ले लेंगे and the variables on the other side, I into j. So this will be 30 multiplied by I cap into j cap. हमने अभी डिस्कस किया था, अगर परपेंडिकुलर है द प्रोडक्ट इज 0. अगर ये i into i होता द प्रोडक्ट वुड हैव बीन 1, बट ये i into j है, दैट मींस 1 cos 90, सो दैट मींस दिस इज 0. सो आवर आंसर इज 0. नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन विद सेम यूनिट वेक्टर. a is equal to 4i cap, b is equal to 6i cap. We are again asked to find A vector dot B vector. So 4, that is 4 into 6, and on the other hand we have I into I. So 4 into 6, 24. I into I, that means 1 cos 0. Both the unit vectors are same, that is 1. Our final answer is 24 this time and not 0. So that's all for today. Hope you liked the video. अगले वीडियो में हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. दैट इज A vector dot B vector is equal to AB cos theta, where this cos theta is this replacement of this dot. So हम इस cos theta के वैल्यू के बारे में बात करेंगे. दैट इज विल डिराइव the value of cos theta. हम ये डेरिवेशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बातें करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.